Good evening, all of you. I welcome all the participants and our today's resource person on behalf of Veer Maheshwar Charitable Trust, Latur, Maharashtra, India. This is daily international webinar series, and today we have invited Dolphin Sacher Madam, who is founder of the Latur Mastery Hub Mumbai, and her topic is right strategy for the legible handwriting. So her contribution in this field is so high that she also visited so many schools for this to have the legible handwriting of the students and teachers. She organized so many webinars and also visits to the schools. Her work is a basic works. Everyone wants a legible handwriting. So we welcome you, ma'am, in this dais, and you can say more about you as introduction about your activity, achievements, award achievements, and the future plans to our teachers, those who are joined here. I welcome you and all the teachers and all the participants, those who are joined you here. And I request you to start your speech. Thank you. Thank you so much, sir, for all your kind words. I will again wish and greet everyone. Good evening, everyone. Um, I would like everybody to please turn on your cameras. It is really wonderful to see everybody's lovely face. I know you all must be tired. It's evening and we all are coming back from work and we are busy. But if you'll keep your cameras off, on, it will really motivate me and I'll feel like I'm interacting. So, telling about myself, introducing myself, my name is Dolphin Sacher, and I am into education field from past 19 years. I had the privilege to work with all the boards from our state board, SSC, ICSC, CBSC, IGCSE, and IG board. I was working as a vice principal in a school, and due to my health, there was some health issues, and I had to leave my. I had to take voluntary. You can say voluntary. I had to take retirement, and I was on bed for almost 1 year. But teacher in me never died. I restarted my career. I will say, with that feel patting myself, I restarted my career at the age of 44. This year, I've also got the award of 30 Inspiring Teachers, and my story was published in Diva Planet also. I'm on a mission that every child has got the right to have legible handwriting. I'm trying to reach all the schools across the globe. It's not only schools which are with uh, good education or with good children around. I'm also working with underprivileged schools also because everybody has a right to have good handwriting. So let's start with the session without wasting time. I would like everybody to use chat box. This session is going to be lot of interactive. Can all the teachers who are teachers here to raise their hands so that I'll come to know there are teachers in this session. Sir, will you help me out to count and tell me how many teachers are there for this session? Please raise your hand. We can use. Okay, I can see one hand. So total, how many teachers are there in this session? 20 are there and mostly are the teachers. Great, great, great. So, my dear teachers, today you are going to have a benefit to understand. And I hope English is comfortable with everyone because I feel it's just a language to communicate. If you are not comfortable, please let me know. I am going to also speak in Hindi and a little bit of Marathi also if anybody is not comfortable with English. Please be if you are comfortable, you can just raise your hand or give me thumbs up. Otherwise, No, you ma'am, can just. English is convenient. Okay, thank you so much. That's why I want you all to interact with me. Okay, so first activity, we'll start a session with this. How are you feeling?
Before joining or starting with this session, please, one word I just want you all to write. How do you feel about this session currently? Are you being forced? Okay, happy? Please use chat box. Very happy, ma'am. Thank you so much. What about others? It will be great if you'll, okay, excited. Thank you. Okay, thank you so much. So, first thing I just want to ask. Yes, ma'am. Sorry. I am muted her, don't worry. Okay, okay. So, first question I just want to ask you all. Do you think can handwriting be improved at any age? Yes or no? Please type on the chat box so that, because what I feel, if you're listening to someone after 20 minutes, you start feeling bored. So we have to be very active. Okay, yes, definitely. Okay, okay. So let me tell you, till the time your muscles are active, handwriting is a skill, you can work on it. Trust me, you can work on it. From the age of 5, when you have learned to hold your pencil, from that age till the age of, say, about 58, till 58, 59, you can. It's just a skill. So it can be improved. If you think that in case if you don't have a good handwriting, you cannot improve it, or no, now तो अभी तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब तो मेरा एज हो चुका है, तो मैं तो अब मेरा handwriting नहीं हो सकता है. No, it can be changed. It can be improved. We all are here as you all are teachers. Trust me, teachers, today what tips I'm going to give you and what you're going to use it in your classroom, it will help you out. Okay. Now let's quickly come to the causes. What do you think can be the causes for when your handwriting really starts getting bad? Can somebody just use chat box and write and tell me what do you think? Reasons. What can be the reasons? Can somebody type and tell me what can be the reasons? Okay, I will only start. There are few things which you have to keep in mind if you want the handwriting to be improved. I hope you all must be sitting with pen and paper. Everybody must be having a notebook and a pen with you. Yes, ma'am. We are Yes, having. great. Because now I'm going to give you a task also. This particular session is not going to make you just sit and listen. I am going to make you do activities also. Okay? So the first cause for bad handwriting is your writing tool. Can you all just for a minute turn on your cameras and show me what pen you have it in your hand? Sir, including you. Okay. Okay. Fine. Thank you. I can see few people have turned on their cameras. A clap for them and thanks to them. So, tool is what we are using to write, plays a very important role in your writing part. Many a times, what as a teacher or what as a professional we are using is the simple 2 rupees, 3 rupees, 5 rupees wala pen. Do you all agree with me? Yes or no? Yes. Please, today itself, throw it off. Please throw it off. You'll ask me why. Hold this pen and write 2 pages with this pen. After some time, you see those marks here, right? What are these marks? These are the pressure which your hand is getting, your fingers are getting, because this is not right tool. This is not right tool. Your tool should be correct. The best tool for all the students who are grown up students using pen or all the professionals
is this 10 rupees ka pen. I'm not here to do branding for some brands. No, I'm just showing you this is simple 10 rupees ka pen. Can you see a grip over here? This is the Yes, ma'am. best pen that you can use for yourself or you can recommend to your students. Please throw it Okay, off. ma'am. We all have that habit of keeping those signature pens, those pericardial pens, which are expensive pens, which we keep it in our pocket, especially all the men. They keep it in pocket and they use it for writing. Sir, that pen is only to give autographs. That pen is not the right tool to be used to write. No, the tool plays a very important role. Now, all the teachers, I hope there are school teachers also in this. Yes, few are So, the school teachers. No, ma'am. College teachers. okay, great. So, you can at least understand this in future. You can use it for your children, for your family, for everyone. We see many a times children using these fancy pencils or pencils like these. Again, I'll say I'm not here to say good or bad about any brand. I'm just showing you the tool. So most of the time children are using these pencils. Again, these pencils are not the right tool. They are not right. This will not give a proper grip when you're holding the pencil. The best pencils are those tripod pencils or these neon domes neon pencils. Again, I'm not here to tell about any brand, but these are the pencils which we use. They are comfortable to hold, comfortable to write. Now, second most important thing is I want everybody to just write your name if your camera is on or not. Just write your name. Okay. Done? Everybody done? So, Yes, ma'am. so again, the mistake that we do is when we place the book, when you are placing the book, if I'm using my right hand to write, my book will be tilted towards left. Okay? It and then I'm going to write. Imagine if I keep my book straight and I'll write. Will I be comfortable in writing? I will not be No. comfortable. It has to be slightly tilted. Ma'am, I have students who are doing their masters in psychology. I have a student who is appearing for 12th standard. So, all the college teachers, it will help you also to make your students understand. So, these are small things which will help everyone. That is why I'm telling. Okay. The next thing is height of the table. Many a times we make our children sit on the bed और ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स टीवी लगा हुआ है बेड पे बैठ के पिलो पे बुक रख के लिख रहे हैं then how can you expect to have a good handwriting? The length of the table should be of your waist size. It should come till here. When it comes till here, then your hand gets fixed on that and then you write. If table is here, you will write this way. If it is down, again your body posture, you will be leaning and this will affect your this body posture. These are very minute things which I myself, before getting in depth of handwriting improvement, I was also not actually realizing it. We as a parents, we never realize. We as a teachers, we don't realize. In fact, for us also, we don't understand and realize these things. Now, till here, is it clear or any doubt? If anybody No, has ma'am. doubt, please unmute and please you can ask me a question. No, ma'am. Okay, sir, are we good to go ahead? Yes, 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 yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. So now, for all the teachers, the most important thing we are always telling our school students or college students, ये क्या लिखा है? I cannot read.
तुम्हारा पेपर क्या लिख के दिया है तुमने, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तुम्हें क्या करेक्शन करके दूं. Don't mind what I'm saying because I'm also into this profession. Teachers, before pointing at students, we have to look at ourselves. We have to look the most important thing when we are writing on board. We all use those chalkboards, even in boards, even in college also. Without our intention is not bad handwriting, but the way we write itself says कि टीचर कोई चल रहा है, वो जैसे लिख रही है तो हम भी वैसे ही लिखेंगे. We have to be very mindful. We have to be very mindful. All the teachers who are teaching in schools, this is especially for you. If you are teaching in pre-primary or primary, you should have a mutual discussion of each and every letter. If you will see there on board, there are teachers who write 7 like this. There are teachers who write 7 like this. Don't you think a 5-year-old or 10-year-old child will get confused? For him, one teacher comes, she writes 7 this way, the other teacher comes and she writes 7 this way. So, what child does? He comes with his own discoveries. He comes with his own way of writing. He starts writing this way. Then you cannot point out child if you are not correct at your handwriting. Teachers are many a times I've seen even for Hindi also, even for maths teachers also. This is Hindi ka do, right? But on board, teacher writes this way, date. What will you expect from child? He is going to write. अगर आप ही बराबर नहीं लिख रहे हो, if you are yourself not writing it properly, teachers, let it be school, let it be college, you cannot point out children. You cannot. आपको पहले आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा. When we talk about legible handwriting doesn't mean कि I'm writing beautiful words but I don't know, they are all scattered. When I talk about legible handwriting means when you respect your margins also. आप बोर्ड पे भी लिख रहे हो, let it be college, let it be school. Keeping everything aside, I'm talking to only teachers. When you're writing on board, you have to respect your margin. If you are writing in the margin, how can you expect a student to not write on the margin? We have to first teach ourselves, then only we can teach our students. We cannot expect those little children to understand because there's somewhere our fault. I visit so many schools and when I interact with teachers, they all come into that mutual thing ki, yes, ma'am, it happens. And it's not wrong or I'm not here to point out teachers, but this happens. I have my own handwriting. Sir will have his own handwriting. Ma'am will have her own handwriting. But that doesn't mean that if you are somewhere, especially in school with pre-primary and primary students, every teacher is writing in different way. Some teachers write in running handwriting, some are writing in prints. Will that child not get confused? The child is going to get confused. We need to work on ourselves. Every academic year, before starting with new session, there should be a meeting on how to have a legible handwriting. That means if a teacher is entering standard 1 or standard 5, all the teachers should be writing same way alphabets, same way numbers. Because when in young age, what they catch till when they reach college or they become professional, that thing carries on. Then the one simple thing happens, parents say,
टीचर ने सिखाया है, टीचर से घर से सीख के आए. The only person who is suffering is student. Today, if I'm here, I'm voice of student. I'm here for everybody to understand what is actually the root cause of handwriting when it becomes a problem. The problem it becomes when we are not doing it properly. I have seen children writing 8 this way, two circles, because this is the easiest way to write. ट्यूशन टीचर को लगता है चलो 8 लिख रहा है कैसे भी लिखे. She will not stop the child. This thing is carried forward later on. And then when parents and teachers realize when the child is in 6th standard, 7th standard, how can you expect a child who is writing 8 this way all of a sudden to change? That's a mental pressure for the child. It is somewhere we adults have to understand that. We have to understand that. Maybe your children, today I'm talking not for teachers also, I'm making even parents to understand. These are very minute things. When I talk about tools, when I talk about the sitting position, when I talk about placing the book, we ourselves, if teacher has given homework, चाइल्ड इज वॉचिंग टीवी, मम्मा एक पिलो दे देती है बेड पे, ये लो 2 पिलो रख दिए, उस पे बुक रख दी, लिखो. ममाज मिशन इज चलो होमवर्क तो कंप्लीट हो रहा है. नो, दैट पिलो इज सॉफ्ट. व्हेन चाइल्ड इज बेंडिंग एंड राइटिंग ऑन दैट पिलो, वो प्रेशर से अंदर जा रहा है. दैट इज नॉट गिविंग दैट प्रॉपर प्रेशर टू चाइल्ड्स हैंड. दैट इज व्हाई when then after few days you see children even holding pen this way, because unko jisme comfort lagta hai. Nobody has ever told them about grip. The correct grip to hold is this middle finger is just to place your pen, and your pointer and your thumb is to hold. It is ideally it is this way to keep your pen or pencil to hold. But even in adults, I've seen people hold pen or pencil this way, and this way. You all will agree with me that we had in childhood, we all had that peer pressure. मेरा फ्रेंड ऐसे पेन पकड़ता है, मेरी फ्रेंड ऐसे पेन पकड़ती है, मैं भी ऐसे पकड़ूंगा. Do you all agree with me? Somewhere we are the root cause. We need to make children understand. We even need to correct ourselves. These are only few things which we are going to keep in mind for our own children, for our own students. Even I have a student who is autistic. You all, I hope you all know our autistic children. Trust me, for that autistic child also, there is a drastic change. If we say that this child is autistic and he cannot write or he cannot improve, I agree. If what children will learn in 20 days, these children learn in 40 to 45 days, but they learn. They learn. Even with deaf and mute, I have children who are hearing impaired. They also, when they keep their hand over here and they listen to me and they follow. So we cannot say कि ये बच्चा special है, ये नहीं सीख सकता, ये ऐसे नहीं कर सकता. Your finer motor muscles. Now, one simple thing, maybe you have a kid at home or teachers who are with pre-primary. This pencil must be in grams. ठीक है, पर हमारे लिए because we are adults, इसका weight कुछ भी नहीं है. It is very light. But think as a 3-year-old, 4-year-old or 5-year-old child. ये उसके लिए weight है. When we mamas or teachers, we give them big pencil to hold. Their finer motor muscles.
their finer motor muscles are not still not developed. They are in developing stage. The best way, because this also makes a lot of difference for young children, please break the pencil into half and give them. Don't give them full pencil because it is difficult for them to hold the weight and write because their finer motor muscles are still developing. Right? Till here, any doubt, any question? Sir, you can also ask me question if you have any question. No, no, it's very perfectly step by step you are explaining, because we are if these blind persons, if they are not teachers of primary, but they are guardians also. So they are having in their home kids and the school children. So they can guide with these tips. No problem. Continue. Thank you so much. There is another problem which is really a challenging one. We don't even realize when our children are writing at home or students this thing. Head down. वो down है तो down ही रहेगा. We have to really, my dear friends, we need to look at these are the root causes when your body posture makes very important role. Another thing I just wanted to ask you all, if a child is using left hand, okay, are you going to make the child start writing with right hand? Who all agree with me that if a child is using left hand, उसको हम force करके right hand से लिखवा सकते हैं? Do you think this is right or wrong? Please use chat box. It's very hard to change his habits, I think. Ideally, sir, we should not force the child because it's all your brain का जो आपका रहता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can say. Ma'am, you can use chat box. Ma'am, you can use chat box. Your voice is not clear. You can use chat box. So, I'll tell you, your brain is linked with the hand which is dominant. Okay? आपका, like we all have our right hand dominating. That means it is more energetic and we are using it everywhere. There are few children or few people who use left hand. We should never force the child who is using left hand कि ठीक है आप right hand से लिखो. That is wrong. Let the child use the left hand. It's absolutely fine. Because this is the question always asked from teachers to me, कि, ma'am, if a child is using left hand, is it okay if I'll make the child use right hand? Please don't do that for poor child. I had a fractured hand for 2 months. I know. I tried using my left hand because my right hand was fractured and that's my dominating hand. It was really, really difficult for me to use left hand. So please don't do with those little ones. Don't do it. Another thing, all the teachers who are teaching in schools, please never ever make your student left hand, the child who's using left hand to sit with the child using right hand. Now you will ask me why. A left hand child is writing this way and right hand child is writing this way. So when they'll be sitting together, their hand will be clashing and there'll be a fight going on in class. So these are very small things which are very important, which we so many times even don't realize. It's not intentionally, but unintentionally, we are making these errors, which we really need to understand. These small things will really help a lot, a lot. Trust me, it's really going to help a lot. Till here, any question anybody has, please, so that I can move ahead. No, ma'am, you can continue. Okay. Now, next comes with all I have told you about. Let's do little recap. I have told you about the grip part. I have told you about position, how you have to keep your hand position, how you have to your body posture. I have told all the teachers
how you have to take care in classroom, right? How you have to do it. And it's also for Hindi teachers also, Hindi and Marathi teachers also. It's not only English teachers. These are few things which you have to keep in mind. Okay. Now, you all, another activity for you all. I have told you all these things. Let's recap. Following my instructions from holding your pen or pencil with your correct body posture, please write your name again. Is everybody writing? Yes or no? Come on, I want to see all those beautiful faces who are hiding behind cameras. Please turn on your cameras. Those who have written, can you tell me, do you find any change in writing? Yes, ma'am. It's looking nice. And Present. and what about the pressure what earlier you were having in your fingers when you were holding the pencil or pen? Do you feel any difference in that? Yes, yes. So all those who want to improve their handwriting, these are few things which you can really do. You can actually write it this way following these instructions, and this will make a lot of difference. My only thing is, because it was 45 minutes session, these are quickly few things which I have pulled in to make you all understand. These few things will also make lot of difference in your um, changes in your day to day life. But if we talk in depth, there are many things, many points which you need to work. Like simple things for all those children who are in pre primary, there are finer motor activities which you can do. If you have children at home, you can always do. आपके घर पे वटाना, अभी ठंडी आने वाला है, वटाने आएंगे. Those peas, make them peel that. बेस्ट एक्टिविटी है. उनके ये मसल्स स्ट्रांग होंगे. आप कपड़े सुखाने जा रहे हो, उनको एक छोटा सा टॉवल दे दो. वो ऐसे जब स्क्वीज करते हैं तो उनके दीज फाइनर मोटर मसल्स डेवलप होते हैं. कपड़े सुखा रहे हो, उनको वो जो ऊपर पेग्स लगते हैं, जो पिंस लगते हैं, वो दे दीजिए. उससे उनको एक्टिविटीज होती रहेंगी. दीज आर फ्यू वेरी सिंपल एक्टिविटीज जो आप करवाओगे, उससे बहुत डिफरेंस मिलेगा. आप घर पे राजमा और चना होता है, वो मिक्स करके एक वाटी में डाल दीजिए. मेक देम, आस्क देम टू कीप इट सेपरेटली. ये सब करने से भी उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होगा. और when they are picking it up, again this thing is going to, there will be a finer motor muscles का activity होगा. These are few things which I can share with you all. But sir, next time give me at least 1 hour session, 2 hour session, so that I can cover it in detail. Yes, yes. Because for 30 minutes, 45 minutes में, these are few things I have tried to pull in. Now, I want you all to ask me questions. That actually I love people ask me questions. I feel that मेरा session गया है, because I'm on a mission that every child has got a right to have legible handwriting. So please ask me questions if any doubt, any questions you have. Participants have listened the tools, the exercises, and the posture, all these things. So you can discuss with your this speaker, because every child, what type of writing is there, what you are feeling, what are the problems with you also. We have a legible handwriting of your kids, so you can discuss with our resource person. Please feel free to ask question. Don't feel कि ये मेरा silly question होगा. What will people think? No. Today you are attending session to clear your doubts. So every question makes a sense to me. So I, with respect, I'm asking if you have any question. आप हिंदी में पूछो, मराठी में पूछो.
या इंग्लिश में पूछो. आई एम फ्लुएंट इन ऑल दीज 3 लैंग्वेजेस, सो आई हैव नो प्रॉब्लम. प्लीज यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच मैम. Anybody, any teacher? I want teachers. Do you have any doubt? Anything? Okay. So what is the takeaway? आज के सेशन से आपने क्या सीखा है? Thank you, ma'am. What is your learning from today's session? At least you can type that for me. कि एक छोटी takeaway है आज का आपने जो मुझे 35-40 minutes दिए हैं. Please. Yes, please give me feedback. I'm waiting for that. I want questions also along with that. If you have any doubt at any point, please ask me. I'm there to help you out. All participants are requested because this topic is not just a listen as a information, but it is a topic related to the problems of the handwriting. When we observe the students handwriting, they are very I think not so fair, not legible. So what type of they are writing, how they are writing, what the problems they are facing. So these basic problems she have discussed with us. So still you are facing such problems, and if you want to do some improvement, then you can discuss, you can take tips from our today's speaker, so that your kids, students can improve their handwriting as eligible. Basically it will look good, and the speed also, it can get the speed to write also. I have one thing. When I was just, sir, you were speaking out, and I could read few things where one of the participant has written writing activity. So it just clicked me one thing. Many schools give those books कि बैठ के लिखो. Go home. This is your cursive writing book. Write 3 pages every day. Please, that will not help any child. Your child is stooping, holding pencil in not correct way, not sitting in a correct position and writing. 10 years also, after 10 years also, this will not work. I did small research. Please, whoever has done, please let me know. I would love to hear. Sir, there was one chat I just missed out. Somebody has written something. सर आप बोलिए, आपका जो रिसर्च है हैंड राइटिंग के ऊपर, मैडम उसको सुनना चाहते हैं. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. Namaste, sir. तो मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ जो मैंने पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाया है. मराठी, गणित, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में कला पढ़ाता हूँ. और मैंने देखा है जो जिन बच्चों को चित्रकला में रुचि है उनका हैंड राइटिंग अच्छा हो जाता है. और मैंने एक छोटा सा एक्शन रिसर्च भी किया है 4th कक्षा के छात्रों के लिए जिनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, जो कैसा भी लिखते हैं, उनके लिए प्रॉपर मैंने एक छोटा सा ये बनाया था स्ट्रैटेजीज. और उसके थ्रू मैं गया तो मुझे ध्यान में आया कि बच्चे काफी इंटरेस्ट लेते हैं. उनको डिफरेंट पैटर्न्स हम सिखाएंगे, कैसे हर लेटर को कैसे लिखना है, हर अंक को किस प्रकार से अच्छा तरीके से लिखना है, 3 लाइन्स 4 लाइन्स में कैसे लिखना है. और नवनीत के बुक्स भी मैंने यूज किए थे और काफी जैसे 70% 80% मैं सक्सेसफुल हो गया था. और अभी तो ये बहुत पुरानी बात है. और जिला परिषद ने मेरा बुक भी उसको प्राइज भी दिया था. सेकंड प्राइज आया था, मेरा नंबर सेकंड आया था. और बहुत आनंद आता है जब बच्चों के साथ हम छोटी छोटी बातों के साथ ध्यानपूर्वक काम करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनको काफी अच्छा लगता है और वे आनंद भी महसूस करते हैं. जैसे उन्होंने देखो ये 4 कैसा निकाला, मैंने कैसे निकाला, ऐसा कंपेयरिंग भी करके वो सीखते हैं. कंपैरिजन, ऑब्जर्वेशन, तो काफी सारी बातें मेरे रिसर्च में हैं. Excellent, sir. It's really excellent. This is what teacher is. Teacher is a teacher. आपको टीचर कोई फोर्सफुली नहीं बनाता है. टीचर आप अंदर से बनते हो. मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं बेड रिडन होने के बाद भी मेरे अंदर का टीचर कभी मरा नहीं. That teaching thing has pulled me out.
सो व्हाट यू वर टॉकिंग, आप जो बात कर रहे थे ना, कला से आपने किया है, इट्स ऑल्सो एन एक्टिविटी, क्योंकि जब आप क्रेयॉन्स पकड़ते हो आपके फाइनर मोटर मसल्स होके आप जब ऐसे करते हो, अगेन वो एक्टिविटी से आपके ये अच्छे से डेवलप होने लगते हैं, एंड दैट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट. अभी वो भी आपका हर बच्चा नहीं कर पाएगा. एज पर योर मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपके 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं. अब तो सीबीएसई एज पर एनईपी 2020, अगर आप सब तो टीचर्स हो तो जानते होंगे, एज पर एनईपी 2020 आपका इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट्स का, राइट? प्लीज यूज दैट, प्लीज. बिकॉज आप जब इंटीग्रेट करोगे, अगर आपने स्पोर्ट्स को किसी इंग्लिश की पोएम के साथ या हिंदी की पोएम या मराठी की पोएम के साथ इंटीग्रेट किया, तो दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस. क्योंकि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चा है, 40 बच्चे का रुचि एक तरीके से समझने का नहीं होता है. कोई बच्चे सुन के समझते हैं, कोई बच्चे लिख के समझते हैं, कई बच्चे विजुअलाइज करके समझते हैं, कई स्पोर्ट्स में ग्राउंड में जाके समझते हैं, कई कलर करके समझते हैं. It was little out of box, but this is the information I just wanted to share. Please, all the teachers, आपको टाइम मिलेगा, एनईपी 2020 को पढ़ के समझिए. जो चीज इंटरनेशनल बोर्ड्स आज काफी सालों से कर रहा है, आई एम हैप्पी फाइनली सीबीएसई हैज अडॉप्टेड इट, और अब वो कर रहा है. वो कर रहा है मगर टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है. जो दे रहा है वो भी प्रॉपर नहीं दे रहा है. इट्स टाइम आप लोग खुद से रिसर्च वर्क करिए और समझिए कैसे है. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी व्हेन यू इंटीग्रेट 2 सब्जेक्ट्स. ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी. धन्यवाद श्याम सुरेश सर, आपका जो संशोधन है वो आपने बच्चों के हैंडराइटिंग देखी है, और जो पूरी हैंडराइटिंग खराब है उसको अच्छा करने के लिए आप ड्राइंग का इस्तेमाल किए वाला है, और उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत सुधार आया है. तो मैडम ने आपको अप्रिशिएट किया, हम भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने ये टॉपिक हमारे लिए मालूम हो गया कि एक टीचर कितने एक्टिव हो सकते हैं, खुद कोशिश करते हैं, अच्छे राइटिंग के लिए कोशिश करते हैं. ये बहुत ही अच्छी बात है. अच्छे टीचर होने के नाते आपका जो ध्यान ध्यान जो अपने स्टूडेंट की हैंडराइटिंग में गया वो सही में अप्रिशिएबल है. थैंक यू सर, आप ये अच्छी अच्छी चीज़ें अपने स्टूडेंट को देते रहिए. हमारी शुभेच्छा. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर. Another thing I just wanted to say, since सब टीचर्स बैठे हुए हैं, आई नो एज अ टीचर बहुत सारा हो जाता है कि आपको फोर्स किया जाता है आपके स्कूल में कर्सिव सिखाओ, या आपके स्कूल में होता है कि आप क्या कहते हैं प्रिंट सिखाओ. नहीं, यू जस्ट वे विथ लेजिबल हैंड राइटिंग. कोई बोर्ड नहीं बोलता कि आप कर्सिव सिखाओ, या कोई बोर्ड नहीं बोलता कि आप प्रिंट सिखाओ. आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि एवरी चाइल्ड शुड हैव अ लेजिबल हैंड राइटिंग. एक सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए. जो 90% स्कूल्स हैं जो भागते हैं कि हमको कर्सिव हैंड राइटिंग करानी है, वो ये नहीं सोचे, जस्ट किलिंग टाइम. वो जब 2-2 3-3 पेजेस, वो जो प्रिंट बुक्स आती हैं कर्सिव हैंड राइटिंग के, बच्चे लिखते हैं ना, एट द पॉइंट दे स्टार्ट हेटिंग दैट, दे स्टार्ट हेटिंग इट. और अगर जिस स्कूल में कंपलसरी है कर्सिव हैंडराइटिंग का, टीचर्स प्लीज, आपको जब छुट्टी मिलता है समर वेकेशन में, आप कर्सिव राइटिंग, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है. वी ऑल आर लर्नर्स, पूरी जिंदगी हम लर्नर्स हैं. आप बुक खोलिए, आप खुद कर्सिव हैंडराइटिंग पहले सीखिए. बिकॉज आप लोग क्या करते हैं टीचर्स, आप लोग खुद ब्लेंड बना के जब बोर्ड पे लिखते हैं, तो बच्चा कहाँ से कर्सिव सीखेगा. आपको खुद से पहले, अगर आपने क्लास में जाना है तो यू योरसेल्फ शुड बी पॉलिश्ड फर्स्ट. So these are small things, sir. With this, thank you so much. You all were lovely audience. Is there anybody else who wants to share or talk or give any feedback, anything? Do let me know. And please help me. मुझे ये spread करना है. Every child has got a legible handwriting. Please help me to spread it across the globe. Every child should be with that. Thank you so much. Thank you so much for all. Thank you so much, sir. आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, एंड थैंक यू सो मच डियर ऑडियंस. थैंक यू. थैंक यू मैम. हम हमारे जो रिसोर्स पर्सन रहते हैं वो पूछते हैं कि सर कितनी देर बोलना है, तब हमको
30 मिनट से 45 मिनट बोलते हैं, बाकी के 15 मिनट डिस्कशन इंट्रोडक्शन और सब कुछ रहते हैं। जब मैं उनको एक ये 1 आवर बोल दिया तो 90% या 10% 20% ठीक है सर बाद में हम टाइटल भेजते हैं ऐसे बोलते हैं। तो टाइम लिमिट कम हुआ तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा इनका हो गया। मैंने आपको 30-35 मिनट बोला था, मगर हमारी इच्छा है सब टीचर्स की कि आपका अगला सेशन 1 घंटा या 2 घंटे का आप जितना टाइम ले सकते उतना आप लीजिए। एक संडे को हम फिक्स करते हैं जो कि 11-12 के टाइम में, कि जो आपको पूरा वर्कशॉप हमारे टीचर्स के लिए हैंडराइटिंग के ऊपर आप लेना है तो दे सकते हैं। आपका स्वागत है। और कुछ स्कूल्स जो टीचर्स हैं जो मैडम को इनवाइट करना चाहते हैं तो वो इनवाइट भी कर सकते हैं कि उनके स्कूल में उनके स्टूडेंट्स के सामने अगर ये प्रैक्टिकल हो जाए, ये तो हम मैडम से सुनेंगे कैसे है, मगर प्रैक्टिकली अगर आप अपने स्कूल में ये प्रोग्राम रखना चाहे तो निश्चित आप रखिए। मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अप्रोच होने के लिए, क्योंकि जहाँ उनके एक्सपर्टाइज आते हैं तो उनके अनुभव शेयर करते हैं, उनका पहले का पूरा ज्ञान हमारे स्टूडेंट्स को और अच्छा बेहतर हैंडराइटिंग करने के लिए काम में आ सकता है। कोई स्कूल कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है तो मैडम को बुला लीजिए और इनवाइट कीजिए, मैं आपको उनसे अटैचमेंट कर दूंगा। और हो सकता है तो आएंगे तो अच्छा है आपके स्कूल में, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन है, हम सुनेंगे मगर स्टूडेंट के टीचर्स अगर प्रत्यक्ष देखेंगे तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो धन्यवाद मैडम आपको। जो हमने थैंक यू आज सो मच सर। सुना थैंक हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम थोड़ा सुधार कर सकते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सत श्री अकाल आपको। और थैंक यू सो मच जो सभी सर। यहाँ सत दर्शक श्री जो अकाल। मिले, जो सभी दर्शक जो है उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और फीडबैक की लिंक दी वाली है, आप फीडबैक भर सकते हैं आज से। और सर आपको वन मोर थिंग, जी अगर सेशन के बाद जैसे बहुत सारे लोग होते हैं शर्माते हैं, सेशन में नहीं बोलते, अगर सेशन के बाद भी अगर आपको कोई अप्रोच करता है और कोई क्वेश्चन है, आप मेरे पास निश्चिंत ओके वो क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको भेज दूंगी। जी जी, ग्रुप में मैं अनाउंस करूंगा कि ये टॉपिक पे आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी जी, और थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू। फीडबैक भरते समय भी आप सभी को विनंती है कि वो आपको जो कुछ लगा आज के सेशन में और कुछ पूछना है तो वहाँ लिख सकते हैं। हमने आपको ये दिया है मार्जिन आपको लिखने के लिए, लास्ट पॉइंट जो रहता है आपका रिमार्क, आप क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं कुछ देर के लिए चालू रखता हूँ, वो फीडबैक की लिंक भरते हैं। Sir, sir, should I wait back or should I leave? Yes, you can wait for questions or you can Yes, go I back. will wait. Please, आप लैंग्वेज को कोई भी बैरियर मत समझो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू लिसन टू यू. मैं भाषा नाही देख रही हूँ, कुछ नाही देख रही हूँ. आप मुझसे पूछो, मला मराठी पण येते. तुम्ही मराठीमध्ये पण मला क्वेश्चन विचारू सकते की काय है काय नाही. थोड़ा ते खराब है, बहुत अच्छा नहीं है, बट आई विल मेक अ पॉइंट टू रिप्लाई. आमोदा मैडम, आमोदा मैडम आप अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। जयवीर सिंह जी, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? जी नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मुझे सब समझ में आया। मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है, मैडम ने इतना अच्छा समझाया है। थैंक यू सो मच सर. रामटेके मैडम, सुशीला सैनी मैडम, साई सर, प्रियदर्शिनी मैडम, कुलकर्णा, नोबिता, डॉक्टर शगुफ्ता खान मैडम, जो कि हमारे स्पीकर्स रह चुके हैं, डॉक्टर ममता इंगोले मैडम, आप सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या फीडबैक फॉर्म में भी भर सकते हैं। धन्यवाद।
I have written the question in the feedback form, sir. Yes, yes. Thank you. Ma'am, I'm present here. If you want to ask me directly, you can ask me, and I'll then and there I'll Yeah. reply you. No, ma'am. I have a very bad habit. I write in a cursive way, but in the end of the sentence, I make a hurry, and the last words, they are many a times unreadable to the person to whom I am giving. So it happens many a times with me. Ma'am, can I just ask you one thing? What Yeah. tool are you using? What type of pen are you using? Are you using this The type pen, of pen? yeah. The pen which you have showed earlier, 10 rupees pen or like that. Yeah, yeah. That grip pen? No, not grip pen, a normal Ma'am, pen. Yeah. ma'am, please throw those pens off. I'll tell Yes, you. yes. They give Yeah. pressure to your fingers, and then after certain time, it's like a task to finish your writing work, and then you tend to do those mistakes. Please, all those college teachers also don't let your children write board exam papers with these pens. Then you will have a tough Okay. time. You will have a tough time doing corrections then. Yeah. I'll buy first the pen. Ma'am, these are also 10 rupees pen. These are with grippers. Yeah, These yeah. are the best pens which you can use. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, Ramteke madam. She is from professor of the education college. So is teacher Yes. of teachers. So she can teach teachers and it can reach the students of the teachers. But In the ma'am, future also. yeah. But today's topic was very unique and genuine, madam. Never thought of this topic. Ma'am, you are Really. into that college training all those Yes. educators. Do invite me. I will visit your college and I'll polish all your educators. And then Of later course, on, they'll ma'am. be. Of course. Sure. I'll talk to BETKAR sir, and of course we'll call you, sir. Call you, ma'am. Really. Thank you so much. Yeah. Thank you. धन्यवाद मॅडम. Thank you, sir. धन्यवाद मॅडम. बेटकर सर, आपल्याही धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण सिरीज चालू केली आणि सगळ्यांना चांगले वक्ते आमच्यापर्यंत आपण पोहोचवताय. मॅडमनी खूप चांगला विषय मांडला आणि ज्या विषयाकडे लक्ष दिल्या जात नाही आज, तो विषय आपण मांडला मॅडम. त्याबद्दल मनापासून आभार. आणि सर, तुमचे मनापासून आभार की असेच चांगले वक्ते आम्हाला रोज ऐकायला मिळावेत. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद सर. धन्यवाद मैडम, आप भी हमारे विश्वास को कंप्लीट किया है। ये Great. टॉपिक तो हमारे अप्रिशिएट किए वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो तेरी है, स्पीकर्स हमें अच्छे ही मिल रहे हैं और मिलेंगे भविष्य में। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आया है मैडम, जी, डॉक्टर पूछिए। खान मैडम का। वो लिखती है कि इज हैंडराइटिंग फोरकास्ट फ्यूचर। They don't actually forecast future, but if you talk about graphology, I have done graphology and all. So in that, it's a science where if I see somebody's handwriting, I can tell about that person. But honestly speaking, tell about that person means that person's nature. But I'll tell you something. अगर आप गुस्से में है ना, आपकी हैंडराइटिंग अलग होगी. आप बहुत खुश हैं, आपकी हैंडराइटिंग अलग होगी. And after few years and few months, आपकी हैंडराइटिंग, because everything is here. Everything is on your mindset. आपकी हैंडराइटिंग सब यहाँ से लिंक होती है. इट्स अ साइंस. ऐसे तो आजकल दुनिया बहुत पागल बनाती है कि आपका फ्यूचर पता चल जाए. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, आपका नेचर पता चल जाएगा. इफ आई रीड योर हैंडराइटिंग, आई कैन टेल यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ यू हैव, द नेचर आपका कैसा है, वो बता सकते हो विद योर हैंडराइटिंग. बट फ्यूचर इज, आई डोंट थिंक सो. दैट्स नॉट पॉसिबल. हो सकता है हमारे डॉक्टर शगुफ्ता मैडम समाधान हो गया है उनका क्वेश्चन से। तो अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए आपको धन्यवाद। और हैंडराइटिंग के बारे में फ्यूचर का पता तो नहीं चलता है, मैडम ने कहा है कि मगर कौन से मूड में उन्हें लिखा है, आनंद में या दुख में या कोई, तो ऐसा बस पता चलने की कोशिश हो सकती है। ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. आप ना ये कभी करके देखिए. आप जिस दिन बहुत गुस्से में होंगे ना, 2 सेंटेंस लिखना, और जिस दिन आप अंदर मन से बहुत खुश है ना, वही 2 सेंटेंस फिर से लिखना. ये आप प्रैक्टिकली आप लोग सब करके देखना. आप खुद अपनी हैंडराइटिंग में डिफरेंस देखोगे. सही है। नमस्ते मैडम. मैडम, मेरा एक सवाल है. जी, पूछिए. कोई बच्चा राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, प्रिंट जो प्रिंट होता है उससे भी बहुत खूबसूरत करता है. जब इतनी खूबसूरती उसकी प्रिंट में होती है, उसका हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है या दिमाग काम करता है?
अनम्यूट हुई मैडम, आपका डिस्टर्ब हो रहा था सुनने के लिए, इसलिए मैं म्यूट कर दिया था, आप अनम्यूट हो जाइए। ओके, तो हैंडराइटिंग का बहुत सिंपल आपको बताती हूँ। जब हम हैंडराइटिंग लिखते हैं ना, उसका आपके दिमाग और आपके आई हैंड कोऑर्डिनेशन का तालमेल होता है। वही एक सिंपल एग्जांपल मैंने जो सर को बोला है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो या खुश होते हो तो मिक्स डिफरेंट। तो आप जो बोल रहे हो दिमाग का होता है खूबसूरत हैंडराइटिंग, उसमें ये सब पॉइंटर्स है कि बच्चे का बचपन में बहुत ध्यान दिया गया है, उसका राइटिंग पोजीशन, उसका होल्डिंग ऑफ पेन, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो ध्यान में रखे हैं। और उसके साथ उसका जो आप बोल रहे हो ना ब्रेन डेवलपमेंट होके उसका दिमाग का, तो उसके कारण वो चेंजेस होते हैं। आपको मेरा बात समझा कि शुड आई एक्सप्लेन यू इन बेटर वे? जी जी मैडम, धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर एनी अदर क्वेश्चन? आई एम हैप्पी, ऐसे पूछो तो मुझे भी लगता है हाँ मेरा सेशन लाइक लाइवली गया है, सबने इंटरेस्ट लिया है। सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, आई एम देयर टू रिप्लाई यू ऑल। मुझे तो लगता है कि आज जो गार्डियन बोल के है, टीचर्स है, उनके घर में जो किड्स है, उनके हैंडराइटिंग बिल्कुल देखेंगे। वो ए से जेड तक या 1 से 10 तक कैसे लिख रहा है, जैसे आपने 8 का उदाहरण लिया, जो सब्जेक्ट है जिसका 6-8 नहीं होता, तो उसको कुछ वो लिखने का तरीका है, वो कैसा लिख रहा है उसको बोलेंगे। सर करेक्ट वे ये होता है 8 लिखने का, मगर क्या है 90%, रुको मैं इस पेन से, पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट। 90% लोग क्या करते हैं, बचपन में शॉर्टकट लेते हैं, ये दो वो सर्कल्स का, और वो ही शॉर्टकट फॉलो करते हैं। उसे कोई कभी पॉइंट आउट नहीं करता, और बड़े होने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये एरर है हमारा। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग सब टीचर्स के लिए हुआ है लॉकडाउन के बाद। अगर आप लोग अग्री करोगे, एवरी चाइल्ड, इट्स नॉट योर स्टूडेंट्स, आपका खुद का बच्चा नहीं, आपका स्टूडेंट नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है कि हैंडराइटिंग सबकी चली गई है। मगर मुझे ये एक चीज है जिसको वापस से बढ़ाना है, क्योंकि हमारे सारे मनुस्क्रिप्ट जितने रिटन है सब हैंड रिटन है। लोग गैजेट्स लेके उसमें लिखते हैं, टाइप करते हैं, लिखना सब भूल रहे हैं, विच इज नॉट राइट। मैडम ये बात बहुत सही बताई आपने। कोरोना के टाइम में बैलेंस बिगड़ा है बच्चों का सभी का। ये बहुत ही कुछ, जैसे कहते हैं ना कि हम 10 साल पीछे चले गए। जब बच्चा दिखता है कई बार मात्राएं तक भूल गया कि 2 आनी थी या 1 आनी थी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच जब हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट कहीं नहीं चल रहा था, जो सब बोर्डिंग पासेस जो निकाले थे वो हैंड रिटन थे। आप वो कभी जाओगे, वो गूगल में पिक्स है तो आप देखो, उसमें उसने बोर्डिंग पास जो बनाया था उसकी हैंडराइटिंग देखो। उसके लिए वो एक स्ट्रगल था, क्योंकि सब प्रिंटेड आता है, प्रिंट कर रहा था और फर्स्ट टाइम वो लिख रहा था। तो आप ये देखिए, ये पिक्चर गूगल में है, आप लिखो माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच हैंड रिटन बोर्डिंग पास, आप इतना लिखोगे आपके पास वो पिक्चर्स आ जाएंगी हैंड रिटन बोर्डिंग पास की। ये ग्लोबल जो अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, सब एआई का सहारा ले रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हैंडराइटिंग, उसको सब भूल रहे हैं। जी सही कहा मैडम। ये एआई से तो और भी ज्यादा परेशानी आने वाली है। एंड ऑफ द डे हम एआई के गुलाम बन रहे हैं, वो कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला है मैडम, क्योंकि वो पास आए थे ऐसे पिक्चर बोल के, मगर वो बहुत गलत हैंड राइटिंग बोल के रॉन्ग रफ हैंड राइटिंग लग रही थी। मगर ये हमारा रिसर्च का टॉपिक नहीं रहने से हमने उस तरफ देखा नहीं। और आपका हैंड राइटिंग का जो लक्ष्य है, कहीं भी हैंड राइटिंग दिखी तो उसमें आपके बारे में एरर्स निकलता है। ऐसे आपने सही बोला कि जो लोग खाली थंब करते हैं, पेन की भी जरूरत नहीं उनको, वो कभी सालों साल पेन से लिखे नहीं, रेडी सॉफ्टवेयर से वो जो कुछ नाम टाइप करना, प्रिंट करना, देना, सब कुछ होता है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएंगी और हो गई वाली है। बहुत साल से नहीं लिखने से उनकी हैंड राइटिंग गलत भी हो गई है। मगर ये अच्छा नहीं है कि जब कहीं पढ़ना है, कोई सिटी टाइम ये कुछ, और वहाँ प्रॉपर रहा तो ही वो आदमी को दिक्कत नहीं आएगी और वो पास हो हैंड राइटिंग का, वो भी अच्छा चलेगा। बहुत बढ़िया। सर अभी रिसेंट एक आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास एक आया था बच्चा, डॉक्टर के लिए उसने एंट्रेंस दिया था और वो पढ़ रहा था।
उसके मम्मी ने मेरे पास भेजा और वो मुझे क्वेश्चन करता है, मैम मुझे ना हैंडराइटिंग सीखना नहीं है। मैंने पूछा क्यों बच्चा? कहता है आजकल वो जो क्या कहते हैं QR वाले रहते हैं ना, वो मुझे सर्कल्स ही तो फिल करने हैं, फ्यूचर में प्रिंट्स निकालूंगा, मेरे जितने भी रहेंगे प्रिस्क्रिप्शंस, तो आई डोंट नीड। तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, जिस दिन अगर आपका वाईफाई डाउन होगा, सब जगह पर नेट नहीं चल रहा होगा, आपका फोन नहीं चल रहा होगा, आपके मम्मी पापा दूसरे शहर में होंगे, आप कैसे कांटेक्ट करोगे? तो मत भूलो, आपको हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नहीं भूल सकते। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब भूल रहे। और मुझे सच में इसलिए बुरा लगता है कि आफ्टर फ्यू इयर्स जैसे सब फेड हो रहे हैं ना, कुछ कुछ चीजें, ये भी फेड हो जाएगा हैंडराइटिंग। एक सिंपल एग्जांपल है सर, मेरा 90% मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। मेरी खुद की जो मदर टंग है पंजाबी, उसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ लिखने के लिए। मगर जब मैं उसको लिखती हूँ मुझे भी चैलेंज आता है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस ही नहीं है। तो वही तो होता है, व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस तो आपका यही होने वाला है। बोले क्या मैम, बच्चों में कैसे जिज्ञासा पैदा करें राइटिंग लिखने के बारे में, हिंदी की खासकर? सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप मुझे टाइप करेंगे या मैं एक मिनट म्यूट करती हूँ फिर बताइए, आप बताइए। जी, बच्चों में हिंदी की राइटिंग के लिए जिज्ञासा कैसे पैदा करें कि वो अच्छा लिख पाए? सर ये सबसे दर्दनाक चीज है कि हमने एक फॉरेन लैंग्वेज जो बाहर से आई है इंग्लिश, उसको सबसे इम्पोर्टेंट कर दिया है। जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसको पीछे कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो जिज्ञासा है वो बच्चों की रह ही नहीं गई है। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी को स्पेशली इम्पोर्टेंस, क्योंकि स्कूल्स भी हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सच बोलूं तो हिंदी इज योर सेकेंड लैंग्वेज। आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपने इंग्लिश, आपने सबसे पहले सर अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको बच्चों में जिज्ञासा अगर करनी है, आपका बोर्ड का प्रेजेंटेशन जो आप बोर्ड पे लिखते हैं, आपकी खुद की हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल करिए। आप हिंदी में अच्छे अच्छे, आपको कोई स्कूल या कोई बोर्ड नहीं बोलता कि आप आपका क्रिएटिव नहीं कर सकते हो लेसन। आप अपने लेसन को क्रिएटिव करिए, आप इंटरेस्टिंग करिए। मैंने अभी बताया ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस और नेशनल ये सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन चल रहे हैं, आप इंटीग्रेशंस लीजिए। ऐसा कुछ करिए कि आपके बच्चे आपकी क्लास के लिए इंतजार करें। आपके जब वो क्लास में बैठेंगे उनको मजा आना चाहिए। आपकी बोर्ड कलरफुल बनाइए। आपको कोई स्कूल मना नहीं करता कि आप कलर चॉक्स मत यूज करो, आप यूज करो। आप पहले आपका हैंडराइटिंग पहले लिख के देखो सर, प्लीज डोंट माइंड इट, बुरा मत मानिएगा। आप खुद से पहले लिख के देखिए आपके खुद के अक्षर कैसे हैं, आपका अ कैसा है, आपका क कैसा है, ये सब आप खुद के आप देखिए। आपको ब्यूटीफुल बनाइए, क्योंकि हम हमेशा, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका जब खुद का प्रेजेंटेशन वहां पर होगा ना, तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। आई होप सर आपको मेरा सजेशन पसंद आएगा और आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे टीचर्स हैं मैडम, जो स्कूल में, बोलिए सर बोलिए। मैडम पहले इंक पेन के अंदर इंक डाला करते थे हम, नीब वाले पेन होते थे, और अभी ये जो आजकल पेंसिल बोल देते हैं हम अपनी भाषा में, जिसमें रिफिल डाला जाता है, तो वो बेहतर था या ये बेहतर है? सर आइडियली बोलूं तो पेन बेहतर नहीं, मैं बोलती हूँ पेन की जो मोटापा होता है, थिकनेस, दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। बहुत ज्यादा थिक होगा तो भी आपको ग्रिप पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, बहुत पतला होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। मगर हम सब वो चाइल्डहुड के हैं जिन्होंने खुद ने इंक पेन यूज किए और यहाँ शाई लगी रहती थी, तो वो हमारी फेवरेट पेन्स हैं, दे आर गुड। द ओनली थिंग इज उसमें भी कुछ पेन्स आते थे जो इतने मोटे होते थे और जिसमें हम एग्जाम लिखते थे तो हमारे हाथ दुखने लगते थे। सो पेन, आप पेन को नहीं बुरा बोल सकते, आपने पेन की थिकनेस जो हम बोलते हैं ना ग्रिप के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट।
जी धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। शायद उनका कहने का ये था मैडम कि वो जो पहले निब के पेन आते थे ना, इंक के, वो थोड़ा सा लिखने का जो पॉइंट था ना, वो थोड़ा रफ रहता था, वो थिकनेस रहने से वो चलने में स्लो चलती थी और हर लेटर हर अक्षर बहुत ही अच्छा आता था। मगर बॉल पेन रहने से उसको इतना फ्री ये फ्लो। है, स्पीड है, स्लो स्लिपरी है कि जो फट 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 लिखने के लिए ठीक है, मगर जो आकार देने के लिए बहुत कम काम में आती है, ऐसा सर का कहना होगा ऐसा कुछ। सर मगर उस जमाने में भी बैड हैंड राइटिंग होता था। सो मैं ऑलवेज सर, आप जो बोल रहे हो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मगर पेन का थिकनेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जेल पेन वो आते थे ना हीरो के, मैं जेल पेन कह रही हूँ, इंक पेन हीरो वाले, वो मेरे पापा मेरे लिए लेके आते थे। मगर वो पेन का जो थिकनेस होता था ना, अगर मैं एग्जाम लिखती थी उतना हैवी हो जाता था, क्योंकि उसमें इंक भी भरी हुई, मेरा हाथ दुख जाता था एग्जाम में लिखते समय। तो जो टूल है ना सर, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जब टूल अच्छा है ना, तो आपके फ्री फ्लो आना ही है हैंड राइटिंग में। तो दैट प्लेज फॉर मी, दैट प्लेज पर्सनली, दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। आपका लेंथ ऑफ टूल, विड्थ ऑफ टूल, वेट ऑफ टूल एक्चुअली आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बोला, छोटे बच्चों को पेंसिल बढ़ा दोगे तो उनका हाथ थक जाएगा, तोड़ के आधी करके दो। दैट्स द थिंग। सही सही है। पहले तो बोरू के पेन आते थे, बोरू का मालूम है आपको? बाम्बू ऐसा छिलके बॉटल में ये लेते थे पहले के जमाने में। मगर बाद में फिर उसका कन्वर्जन पेन की तरफ से हो गया, फिर बॉल पेन आ गए। अब तो पेन का भी सवाल नहीं रहा, अब तो डायरेक्ट अब कंप्यूटर तो में टाइप हो रहा है। टैब्स आ गए टाइप करने के लिए। दैट इज व्हाट सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम भूलते जा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन कराता है, एक्सरसाइज कराता है और आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, जो हम लोग सब इस तो इम्पोर्टेंट स्किल को भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये मिशन में निकली हुई हूँ कि सबको रियलाइज कराना है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल विच वी ऑल आर फॉरगेटिंग। आपका मिशन सक्सेसफुल हो और आगे वाले जनरेशन का जिसको आपने ये शिक्षा दी है, अप्रोच हुआ है, उनके अक्षर सुधरेंगे, क्योंकि उनका जो बाद में जो सुधरने का एज रहता है तब बिल्कुल नहीं सुधरते, कितना ही कोशिश किए तो आर्ट वैसे लाइफ भर निकालेगा। और पहली बार अगर गलत लिख रहा है, अगर टीचर ने करेक्ट बोल दिया तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। बहुत कुछ पुराने एज में 12वीं के बाद बिल्कुल होना मुश्किल है, हो जाएगा मगर बहुत मुश्किल है। और पहली बार जब स्टूडेंट देखते हैं इंग्लिश कैसे लिखते हैं, तो उसके अगर टीचर ने ऑब्जर्व करके उनके अच्छा हैंड राइटिंग करने की कोशिश की आपके माध्यम से, तो शुक्रिया। अच्छा है, आगे वाली पीढ़ी का अच्छा हैंड राइटिंग हो, आपका मिशन सक्सेसफुल हो। हम बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन करते हैं और आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, थैंक यू। इट वाज रियली नाइस मीटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयवीर सिंह जी, और थैंक यू ममता मैडम, और हमारे रामटेके मैडम, शगुप्ता मैडम, डॉक्टर मैडम, और सभी ने जिन्होंने आज इसमें सहभाग लिया और अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, और आपने हैंड राइटिंग के बारे में, थैंक यू टू ऑल।